मुंबई महानगरपालिकेचे निवडणुकीचा प्रचार हा शेवटच्या टप्प्यामध्ये आलेला आहे। प्रभाग क्रमांक 215 मधून ह्या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार आहेत। आपल्यासोबत ह्या ठिकाणी अरुणा वाघ यांच्या समाजाची नुकतीच तुळशीवाडी ह्या ठिकाणी सभा झाली, त्यांचा विचार मांडणी झाला। आपल्या ठिकाणी त्यांच्या समाजाचे वरिष्ठ नेते, वरिष्ठ ज्येष्ठ लोक ह्या ठिकाणी आहेत। आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। आप मैडम के बारे में क्या कहेंगे? हूँ मुंबई मेघाल पंचायत माजी प्रमुख श्री जयसिंह भाई खिंजवाई पड़ाया રહેઠાણ તાળવાડી મજગાંવ મુંબઈ 10માં રહું છું। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 89થી લઈને અત્યાર સુધી મુંબઈ મેઘાલ પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે અને પ્રમુખ તરીકે મેં સેવા આપેલી છે। આજે આ વિસ્તારમાં ખાસ મને દિનેશભાઈ મારું આમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવેલો કે મારી ભત્રીજી છે એ દીકરી ભાણેજ છે, દીકરી ઇલેક્શનમાં ઊભી રહી છે, તો આવીને થોડોક સપોર્ટ કરો, કારણ કે એ અપક્ષ છે। पार्टी हो तो पार्टी में अलग है, अपक्ष એટલે अपक्ष कैंडिडेट ने सपोर्ट ની બહુ જરૂર હોય છે। पार्टी कैंडिडेट में શું છે, એની પાસે પૈસા હોય બધું હોય, પણ અહીંયા આપણી પાસે પૈસા ન હોય કે કોઈ કાર્યકર્તાઓ ન હોય, તો આ બેનને, આ દીકરીને, અરુણાબેન વાઘને આપણે એને ફૂલ સપોર્ટ કરવાનો છે કે એ દીકરી ચૂંટાઈને આવે તો આ વિસ્તારનું સામાજિક ક્ષેત્રે કામ કરે, રાજકીય રીતે કામ કરે અને અન્ય બીજી કોઈ પણ બાબત હોય એમાં એ બેન નો સહકાર આપણને મળે। તો મારી મેઘવાળ સમાજની વિનંતી છે, મેઘવાળ રોહિદાસ ગઢવા સમાજની મારી વિનંતી છે કે અરુણાબેનને વધુમાં વધુ મતોથી ચૂંટાઈને લાવો અને એ બેનની આપણે એક મોકો આપીએ। અહીંયા ઘણા નગરસેવકો થઈ ગયા, માજી નગરસેવકો ઘણા થઈ ગયા, પણ એનું કાર્ય આપણે અત્યાર સુધી કાંઈ જોયું નથી। હવે આ બેન આવે એને એક મોકો આપો તો આ બેન કાર્યશીલ છે અને કાર્યપદ્ધતિવાળી છોકરી છે। મનસેની અંદર આજે 4-5 વર્ષથી છે એ જે શાખા પ્રમુખ છે એની, એટલે આપણી એક દીકરી મેઘવાળ સમાજની દીકરી જો મનસેની અંદર કામ કરી છે તો મેઘવાળ સમાજમાં કામ કે ન કરે, એટલે આ બેનને આપણે જીતાડવા માટે આ प्रयत्न करो, यही नम्र विनंती। धन्यवाद। बेन वाघ के लिए मैं कहना चाहूंगी, जो 4 साल से मनसे की शाखा प्रमुख रह चुकी है और प्लस हमारी मेघवाल समाज की वो दिकरी है। हम लोग दिकरी लोग मतलब लड़कियां जो काम करती है ना, वैसा किसी ने अभी तक काम नहीं किया है। और मेघवाल समाज के पहला कैंडिडेट ऐसा है कि अपक्ष खड़ा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मेघवाल समाज को, गरुड़ समाज को और रोहिदास समाज को मैं विनती करूंगी कि हमारी दिकरी, हमारी जो है बहन, उनको सपोर्ट करे, उनको वोट करे और भारी बहुमत से जिता के हमारे मेघवाल समाज की, हमारी गुजराती समाज की एक ताकत दिखाए। सर जी, आप क्या कहेंगे? पहिलं तर तुमच्या माध्यमातून मी हे सांगायला इच्छितो, कारण ह्या ज्या आमच्या अरुणाताई उभ्या आहेत ते ऑलरेडी सोशल मध्ये लो करत आहे आणि सुशिक्षित असल्यामुळे त्यांचे खूप ह्या विषयावर त्यांचं संशोधन आहे आणि त्यांनी 5-6 वर्ष इथे काम केलेलं आहे। नगरसेवक म्हणून नसून सुद्धा त्यांनी नगरसेवक सारखा काम केलेलं आहे आणि काही प्रश्न त्यांनी सॉर्ट आउट पण केलेले आहेत। आता त्यांची महत्वाची इच्छा अशी आहे की मी एखादा पदावर राहून जी सेवा करू शकते ती सेवा मी नगरसेवक म्हणून करू शकते। जरी मला पार्टीने जर तिकीट दिली नाहीये तरी पण मी अपक्षाने लोकांच्या मतावर यायचा ठामपणे विचार करून ते अपक्षवर उभे आहे। तरी सर्व लोकांना सांगेन की आपली मराठी भाषा किंवा ह्याचा तर्क न करता या विशिष्ट भाषावर लक्ष द्यावं आणि यांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांनी मत द्यावं। मॅडम, तुमच्या समाजाला तुम्हाला चांगला पाठिंबा भेटतो, या संदर्भात आपण काय सांगणार? इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अपक्ष उम्मीदवार से खड़ी रही हूँ और मैं आप सभी से आशा रखती हूँ कि मेघवाल समाज के लिए हमको आगे आना चाहिए और मेरी हिम्मत और ताकत बढ़ानी चाहिए और बहुमती से मेघवाल समाज को विजय करना चाहिए। मोठ्या पक्षाचे नियमित कार्यकर्ता असतात, त्यांच्याकडे पैसा पाणी खूप असतो, परंतु अपक्ष जो असतो हा स्वतःच्या बळावरती, आपल्या कामाच्या बळावरती तो या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभाग होतो। अशात या ठिकाणी 215 मधून अरुणा वाघ या अपक्ष उमेदवार आहेत। बघूया इकडच्या मतदार त्यांच्या पारड्यामध्ये 15 तारखेला किती प्रमाणामध्ये मतदान करतात। पाहत राहा 24 दिव्य महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई।